Good morning, 7th English medium students. Now, again, we are here for our social science video, and as you know, that yesterday we just complete the explanation of our lesson 15, the President and the Central Council of Ministers. Okay, so if the explanation is completed, now we are going to start the exercise of our this lesson. And in exercise, as you see, that as usual, like all the lessons, our first question is choose the correct alternatives from the following. Here are the questions given to you, and you have to give the correct alternative of related question. So in this manner, our first question is the term of the office of the president is. The term of the office of the president is, that means the working duration or the working term of a president in office is. Our options are given here in your textbook. A option 6 years, option B 1 year, option C 5 years, and option D 4 years. So here I write only the correct option of the question. So the correct option or the right option is option C 5 years. So the term of the office of the president is 5 years. Okay. Now our second question is the power to grant pardon lies with. The power to grant pardon lies with the. So students, as I explained you yesterday, that president has the power to grant pardon. That means प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है, ये पावर होता है कि वो किसी भी व्यक्ति को माफ़ करा सकता है उसकी सज़ा से. यदि किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी गई है तो उस फांसी की सज़ा को प्रेसिडेंट को ये अधिकार होता है कि वो उस फांसी की सज़ा को लाइफ लॉन्ग प्रिजनमेंट में, दैट मीन्स कि उम्र कैद में चेंज कर सकता है. और यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि इनोसेंट है और उसको किसी बाय मिस्टेक किसी सज़ा को सुनाया गया है, तो उस सज़ा को प्रेसिडेंट सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करते हुए, सारे चीज़ों को, व्यूज़ को क्लियर करते हुए उस सज़ा को पार्डन कर सकता है. दैट मीन्स कि माफ़ कर सकता है. सो द पावर ऑफ टू ग्रांट पार्डन लाइज विद द. So our options here are given. A option Prime Minister, B Defense Minister, C Vice President, and the D President. So the right option is option D, President. President has the power to grant pardon lies with the President. Okay, the power to grant pardon lies with the President. Got it? Now in exercise of this lesson, our second question is fill in the blanks. Our second question is fill in the blanks. The Vice President is the ex officio dash of the Rajya Sabha. So the Vice President is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. जो Vice President होता है वो ex official chairman होता है राज्य सभा का. You have to fill chairman in your first fill in the blanks. Now come to the next fill in the blanks. Dash allocates portfolios amongst the ministers. Dash allocates portfolios amongst the minister. So Prime Minister allocates portfolios among the ministers. You have to fill Prime Minister in your second fill in the blanks. Okay. Now here's your third fill in the blanks, that the elected members of the state legislative assembly, that means Vidhan Sabha, and the elected members of dash participated in the election of the president. So the elected members of the state legislative assemblies and the elected members of
Parliament, okay, Parliament, Parliament participate in the election of the president. Got it? Next, fill in the blank. Dash appoints the governors of the state. So here is our fourth fill in the blank, that dash appoints the governor of the state. So president appoints the governor of the state. You have to fill president in your fourth fill in the blanks. Now come to the short answer type questions. So in your book there are total 3 short answer type questions are given. So our first question is, why was the vice president never participate in the voting of a bill? Why was the vice president never participate in the voting of a bill? क्यों वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कभी भी बिल को वोट करने के लिए पार्टिसिपेट नहीं करता है? सो द वाइस प्रेसिडेंट नेवर पार्टिसिपेट्स इन द वोटिंग ऑफ अ बिल बिकॉज ही इज नॉट एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा, क्योंकि वो राज्यसभा के का चुना हुआ सदस्य नहीं होता है. राज्यसभा के चयनित सदस्यों को ही ये अधिकार होता है कि दे हैव टू पार्टिसिपेट इन द वोटिंग ऑफ अ बिल. एंड as vice president was not, or his not, vice president is not the member of elected member of the Rajya Sabha, so he is not or never participate in the voting of a bill. Next is, when does the president issue ordinance? President ordinance को कब issue करता है? So the president can issue ordinance when the parliament is not in session. प्रेसिडेंट पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं होता है तब इशू करता है ऑर्डिनेंस को. ओके. नेक्स्ट इज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स आर देयर इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स आर देयर इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी? सो द आंसर इज, इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स. एग्जीक्यूटिव्स इन नेम एंड द रियल एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव नॉमिनल, जैसे मैंने आपको बताया था, विच इज़ द ओनली कॉन्स्टिट्यूशन हेड, विच इज़ नोन एज ओनली द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द अदर मेंबर्स विच आर इलेक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, द रियल एग्जीक्यूटिव्स. ओके. सो इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ executives, executives in name and the real executives. Now come to the next question of the exercise of our this lesson is long type answers. Long type question answers, that means you have to give the answer in more than 2 or 3 sentences. Okay. So here our first question in this manner is, what are the qualifications necessary for the post of the president? What are the qualifications necessary for the post of the president? So qualification for president, I yesterday explained you that there are some qualifications which a member or a person who want to president have required. So the main qualification for president are, he must be citizen of India. Okay, he must be citizen of India. He must have completed 35 years of age. He must be qualified to be elected as member of the Lok Sabha, and he must not hold any office or profit in file government. Okay, so there are the qualification of a president, जो कि मैं आपको कल भी पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ. आपको आंसर में qualification of the president मेंशन करना है. And after this our next question is, explain the powers of president. It's the last question of our this lesson. Explain the powers of president. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि कल हमने पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट को भी डिस्कस किया था हमारे वीडियो में, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट को क्या क्या पावर मिले हुए हैं. प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर. ओके. एंड विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ही कैन अपॉइंट द अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. हियर इज आवर फर्स्ट power of president. President appoints the prime minister, and on the advice of the prime minister he also appoints their other ministers. Okay. Now next power is, the president appoints the governors of the states, chief justice and judges of the Supreme Court and the High Court. President has the power to appoint governor of the states, chief justice and the other judges of the Supreme Court and High Court. Okay, president को power है governors को appoint करने का,
चीफ जस्टिस को, जजेस को, और जजेस को, चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने का सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के. President also appoints the chairman and the members of the National Human Rights Commission, okay, and many other commissions prescribed in the Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस्क्राइब्ड बहुत सारे कमीशंस के साथ साथ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को भी अपॉइंट करने का जो राइट और पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है. ओके, नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन. दिस ऑर्डिनेंस इज गुड एज अ लॉ. प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस, अभी हमने शॉर्ट आंसर में भी इसको पढ़ा है. And when president can issue ordinance when the parliament is not in session. So parliament is not in session, this ordinance is goes as a law. ये ordinance जो है वो उसी तरह अच्छा होता है जिस तरह से कोई law या कानून अच्छा होता है. Last power of the president which is mentioned in this lesson is, or in this answer is, the president is the head of the country. He has the power to grant pardon in case of death sentence by court. The president can grant pardon or convert it into life imprisonment. अभी जैसा मैंने बताया कि ग्रांट पार्डन का पावर होता है प्रेसिडेंट को कि वो किसी की भी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, फांसी को उम्र कैद में परिवर्तित कर सकते हैं. ये एक पावर जो है वो हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होता है. Okay students, so here's we completed the exercise and the question answers of our lesson 15. Okay, and now the president and the council of ministers exercise and question answers are now completed. Okay, and in our next video we will discuss the next lesson of our this subject. Thank you.